हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज बिंदास एजुकेटर। सो हमने बच्चे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सरफेस एनर्जी के बारे में, ठीक है। और उस सरफेस एनर्जी में हमने पढ़ा था कि सरफेस एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सरफेस एनर्जी क्या होती है। और लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन T इंटू चेंज इन एरिया। ओके, तो चलिए आज हम इस लेक्चर को लेके आगे बढ़ेंगे और आगे जो हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में, आज हम पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी में, यानी कि सरफेस एनर्जी यानी कि जिसे हम वर्क डन भी बोल सकते हैं। सो वर्क डन इन इंक्रीज ड्रॉप साइज, ड्रॉप के साइज को इंक्रीज करने में, वर्क डन इन ड्रॉप फॉर्मेशन, वर्क डन इन इंक्रीजिंग बबल साइज, वर्क डन इन बबल फॉर्मेशन and breaking of larger drop into smaller drops, and last that is very important, collapse of smaller drops into larger drops. Okay, so यहाँ पर हम ये 6 टॉपिक्स जो है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर। सो फर्स्ट होगा हमारा इंक्रीज इन ड्रॉप। ओके, सो चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो है हमारा उसकी बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज सेइंग हियर, द फर्स्ट वन टॉपिक इज increase in drop size. Okay, so here suppose we were having a drop, initially we were having a drop. Okay, मान लीजिए कि हमारे पास कोई इनिशियली ये ड्रॉप थी। अब हमने क्या किया, इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पर इस ड्रॉप का साइज जो है बड़ा कर दिया, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव increased the size, that means increasing size। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियली पहले जो था इसका रेडियस r था, अब इसका रेडियस जो है वो r2 हो गया, ठीक है। सो लेट अस सपोज दिस वाज r, नाउ r1, लेट इट बी, नाउ इट हैज बिकम r2। ओके, सो वी कैन राइट दैट इनिशियली बच्चे शुरुआत में इसकी जो एनर्जी रही होगी, कौन सी एनर्जी, सरफेस एनर्जी, वो कितनी रही होगी। देखो ये ड्रॉप है, ड्रॉप के लिए मैंने बताया था आपको कि सरफेस एनर्जी जो होती है हमारी वो क्या होती है, सरफेस एनर्जी होती है हमारी सरफेस टेंशन इनटू एरिया डेल्टा ए, ठीक है। तो ये इसकी सरफेस एनर्जी क्या रही होगी, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए, ये सरफेस एनर्जी रही होगी चेंज इन एरिया। अब देखो ड्रॉप का पहले एरिया क्या होगा, देखो ड्रॉप क्या है, एक स्फीयर है, और स्फीयर का जो एरिया होता है वो आपको पता है कि एरिया ऑफ द स्फीयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, चेंज इन एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ठीक है। यहाँ पर जो इस इनिशियली जो ड्रॉप का एरिया है वो इनिशियल एरिया हो जाएगा, फाइनली जो एरिया है वो फाइनल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा ए अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा, डेल्टा ए हमारे पास हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर जब सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल टू टेंशन टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा, सरफेस एनर्जी हमारे पास हो जाएगी सरफेस टेंशन टी इंटू डेल्टा ए, और डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगी बच्चे हमारी फाइनल वैल्यू। तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कि कोई एक ड्रॉप है, उसका रेडियस इतना था, उसकी रेडियस हमने सपोज 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर किया, इंक्रीज कर दिया, तो बताओ कि सरफेस एनर्जी या फिर कितना वर्क डन हमें करना पड़ा। तो यहाँ से ये सरफेस एनर्जी लगा के हम जो है ये वर्क डन जो है निकाल सकते हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, work done in increasing the surface area। ओके, सो यहाँ पर इसको स्टामा कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो इस पे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंक्रीज इन ड्रॉप साइज, हमने बात किया, अब ड्रॉप फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि ड्रॉप फॉर्मेशन में हमें कितना वर्क डन जो है करना पड़ेगा। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है ड्रॉप फॉर्मेशन। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, दैट इज ड्रॉप फॉर्मेशन। ओके, सो ड्रॉप फॉर्मेशन जो होता है, इसको अगर आप देखें कि ड्रॉप फॉर्मेशन कैसे होती है, तो बच्चे मान लेते हैं हम कि स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ क्या था, वाटर था, ठीक है।
पहले कोई ड्रॉप नहीं था, कोई सर्कुलर चीज हमारे पास नहीं था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस वाटर से हम यहाँ पर ड्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप, ठीक है। तो अगर ड्रॉप फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे तो ड्रॉप फॉर्मेशन देखो क्या होगा, अगर ड्रॉप फॉर्मेशन देखेंगे तो इनिशियली देखो, इनिशियली जो होगा हमारा एरिया क्या रहेगा, इनिशियल जो एरिया रहेगा, इनिशियल एरिया वो क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि कोई सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू मेमोराइज, दैट इनिशियल एरिया हियर वी विल कंसीडर जीरो, एंड सपोज वी आर फॉर्मिंग अ ड्रॉप हियर which is having the radius, which is having radius r. Suppose the radius of this drop is r. Okay, so now the area will be, how much the area will be, area will be, so initial area is 0, so this will be final area, and final area will be 4 pi into r square. So we can say the work done or surface energy will be equal to tension into delta A. Okay, and delta A here is how much, delta A here will be, delta A here will be final minus initial. Okay, so final is how much, final is 4 pi r square minus initial is 0. So therefore change in area will be 4 pi into r square. Okay, so now we can write that surface energy here in this case will be surface tension T, surface tension T into, surface tension T into 4 pi r square minus 0, that will be equal to surface energy is equal to tension, surface tension T into 4 pi r square. Okay, so this is going to be the final answer. So this is going to be our final answer for this particular situation. Or we can also write here as that this is going to be the, this will be the work done in drop formation. Okay, so this will be our answer. So we will again mark it as star. देखिए बच्चे, बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आपको लग रहा है कि मामला ज्यादा जहरीला हो रहा है तो कृपया ध्यान से देखें, वीडियो की स्पीड स्लो कर लें, अगर आपको आसान लग रहा है तो वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लें, ठीक है। सो दैट विल सेव योर टाइम एज वेल एज विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिजिक्स बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे, देखो हम क्या कर रहे हैं, पानी की बूंदें ही तो बना रहे हैं, और कुछ रॉकेट साइंस तो हम कर नहीं रहे, बहुत ही आसान सी चीजें, सरफेस एरिया का यूज कर रहे हैं, सरफेस टेंशन की डेफिनेशंस वगैरह, बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैं आपको ये सारी डेरिवेशंस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कोई भी फॉर्मूला याद ना करना पड़े, पूरी फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला याद ना करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ ये डेरिवेशन जो है, इन्हीं में आपका काम जो है पूरा हो जाए, ठीक है। अब चलिए, हमने ड्रॉप फॉर्मेशन की बात की, अब आगे चलते हैं, आगे हम कर लेते हैं बच्चे इंक्रीज इन साइज ऑफ बबल, ठीक है। अब बबल के बारे में बात करते हैं, इंक्रीज इन साइज ऑफ बबल। ओके, सो अगर इंक्रीज इन साइज ऑफ बबल की हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखो क्या होगा, हमारे पास क्या था, मान लेते हैं इनिशियली हमारे पास जो है कोई बबल था, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई जो है, एक से हमारे पास जो है कोई एक बबल है, ठीक है, ये बबल मान लेते हैं। बबल के बारे में आपको पता है कि बबल में क्या होता है, बबल में अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जो बबल है इसका जो रेडियस है, वो रेडियस हमारा कितना है, वो रेडियस हम मान लेते हैं कि इसका r1 है इनिशियल, ठीक है। सो इनिशियल रेडियस इसका r1 है। इससे हमने क्या बनाया, इससे हमने क्या बनाया, इससे हमने एक बबल बनाया जिसमें हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इस वाले पुराने वाले बबल का साइज जो था वो इंक्रीज कर दिया, ठीक है, जैसे कि हमने ड्रॉप का पढ़ा था। तो अगर साइज इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, इसका जो रेडियस होगा, मान लेते हैं कि रेडियस जो है वो हमारा कितना हो गया, रेडियस हमारा हो जाएगा यहाँ पर r2, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्चुअल में वी आर इंक्रीजिंग द साइज, इंक्रीजिंग साइज ऑफ बबल, ठीक है। साइज इंक्रीज किया तो देख लेते हैं, देखो इनिशियल एरिया कितना था, इनिशियल अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनिशियल एरिया, सो इनिशियल एरिया कितना होगा, सेम फॉर्मूला, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई r1 स्क्वायर। फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, फाइनल एरिया हमारा हो जाएगा 4 पाई इंटू r2 स्क्वायर।
बट आपको एक बात पता है कि जब हमने ड्रॉप के बारे में पढ़ा था, तो ड्रॉप के अंदर क्या होता है, वाटर, तो एक फ्री सरफेस होता है दैट इज आउटसाइड जस्ट, सो वहां पर सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, टेंशन इनटू डेल्टा ए। लेकिन अगर हम बबल के बारे में बात करते हैं, तो बबल के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, सो देयर आर टू फ्री सरफेसेस, सो इन दैट केस दैट सरफेस एनर्जी विल बिकम टी इनटू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए। ओके, ठीक है, सो आई होप यू रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर। सो प्रीवियस लेक्चर में ये इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, बस यही डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं कि डेल्टा ई चेंज इन सरफेस एनर्जी, या फिर इसका जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए, ठीक है। और इस डेल्टा ए को कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, वर्क डन उस चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन टी इनटू 2 times of delta A, that is final minus initial, that is 4 pi r2 square minus 4 pi r1 square, and this is going to be our work done. Okay, so this will be work done, change in the surface energy in increasing the size of the bubble from r1 to r2. So again, I'll just mark it star. Okay, so let's mark it star. ठीक है, चलिए ये हो गया। अब चलिए बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ बबल की, नेक्स्ट टॉपिक। Now, if we talk about the formation of the bubble, so you know very well that it will be same only. That is, initially there was water. Okay, so initially we had just water. So initial surface area will be 0. Okay, and finally, if we take it as a finally, so finally what we are doing, we are forming a bubble. Okay, so we are forming a bubble, and the radius for this bubble, suppose the radius for this bubble is r. Okay, so the radius is r. So here what we have done, we have done the formation of bubble, okay. So initial area is 0, so the what will be the final area? Okay, so final area will be equal to how much, 4 pi r square. And similarly, again, the change in surface energy, or we can say the work done, will be equal to tension T, that is surface tension, into 2 times of change in area for the bubble. So work done here will be equal to tension T into 2 times of change in area. So initial final area is 4 pi r square minus initial area is 0. So finally, our work done will be equal to T into 2 into 4 pi r square. Okay, so this will be our final expression. Okay, so it will be like this. Okay, now let us move on to the Coalesce, or breaking of a big drop into smaller drops. Okay, so next will be breaking of big drop into smaller. Okay, ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि इनिशियली वी वर हैविंग अ बिग ड्रॉप. Okay, now what happened here is this big drop is broken down into smaller little drops. Okay, suppose it has broken down into little drops, and these little drops all are having equal radius. Okay, so suppose this bigger drop was having radius capital R, and suppose these smaller, we can say these smaller drops are having radius small r. Okay, and suppose it was a just one drop. Okay, so there are n number of drops formed, or we can say that this bigger drop has broken down into n number of smaller drops. So here the initial area here will be equal to how much? Initial area here will be equal to 4 pi into capital R square.
but final area here will be addition of all the areas of these small drops. So that will be n times of area of one drop, that is 4 pi into small r square. Okay, but you know that the change in area will be directly how much? Change in area here will be how much? Change in area here will be final area, that is n times 4 pi into r square minus 4 pi capital R square, that is initial area. Okay, so therefore our surface energy, change in surface energy, or we can say that work done will be equal to how much? Work done will be equal to surface tension T into n times of 4 pi small r square minus 4 pi capital R square. Okay, so from here we can take this 4 pi common. Okay, so if we take this 4 pi common, so we will be left with, that is tension T into 4 pi into n times r square minus capital R square. Okay, so now what we can do, we can find the relation between small r and capital R. Okay, so let us move on to the next page. So we what do we have? We have that we had that delta E, or change in surface energy, will be equal to 4 pi into surface tension T into, in bracket we were having n small r square minus capital R square. Okay, but we know very well that the volume of the water, okay, so the bigger drop is broken down into, when the big drop is broken down into small drop, so the one thing which is constant is the volume of water. Okay, so we can say that volume is going to be constant, volume will be constant. So the initial volume was how much? Initial volume will be 4 by 3 into pi r cube, that is the volume of a sphere, and that will be equal to the volume of the smaller drop will be 4 by 3 pi r cube, and their number is how much? Their number is n. Okay, so now you see here 4 by 3 will be cancelled, pi to pi will be cancelled. So we get how much? We get that capital R cube divided by small r cube is equal to n. So if we take cube root both the sides, we can write that capital R by small r is equal to n to the power 1 by 3. Okay, so from here we get that small r will be equal to capital R divided by n to the power 1 by 3. Okay, so we have got this relation. We have got this relation between capital R and small r. Okay, now if you utilize this relation here, okay, so here if we write that, that means R delta E will be equal to how much? Delta E will be equal to 4 pi T in bracket this n r square. So here we can write n into r square, small r square. So we can put the value of small r, that is capital R by n to the power 1 by 3 square minus capital R square. Okay, so now if we further solve it, how much we will get? We will get that delta E will be equal to 4 pi into, if we take capital R square common, capital R square, and this is T. So what will be left with? We will be left with, this is n to the power 1 and this is n to the power, here it will be, upon squaring it will become 2 by 3. Okay, because it is the square. So if it will go above, it will become minus, so 1 minus 2 by 3. So when you will solve it, you will get that it will become n to the power 1 by 3 minus r square we have already taken common, so it will be 1. Okay, so we will be left with this. So this will be the change in energy. That means this is one more expression for change in the surface energy. Okay, so you know very well that we are having, this is change in surface energy. So you know very well that whenever you use the water coolers, so in coolers what happens? In coolers what happens? The water drops, bigger water drops are broken down into smaller drops. Similarly, whenever you bath under the shower, so under the shower, what is happening? The water is coming in the form of a smaller drops. So these smaller drops you feel cool. Okay, whenever we sprinkle water anywhere, we feel cool, because whenever the larger drop is broken down into smaller drop, so at that time what happens? The energy, or we can say the energy of the smaller drop is the energy of the smaller drop is higher, and this is at lower. Okay, the larger drop is having lower energy, whereas this smaller drop has higher energy.
So what will happen to gain the higher energy? What they will do? They will absorb heat from the environment. Okay, they will absorb heat from environment. Okay, and if they absorb heat from environment, that means they will give a cooling effect. So this is very important top concept here that they give cooling effect. So you always remember, whenever a bigger block or a bigger drop, whenever a bigger drop is broken down into smaller drop, it is always going to give the cooling effect. Okay, so यहाँ पर क्या होगा, हमारा cooling effect होगा. अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये हमारा चेंज इन एनर्जी है, यानी कि ये एनर्जी क्या होगी, यही हमारा चेंज इन एनर्जी है, यानी कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड फॉर्म. ठीक है, सो देखो चेंज इन सरफेस एनर्जी देखो क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यानी कि ये जो चेंज आ रहा है ये क्या है, हमारा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है. ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको हम एक और चीज इससे लिंक कर सकते हैं, हम इससे टेम्परेचर पे चेंज निकाल सकते हैं. कैसे, देखो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं किससे. देखो जब भी कभी टेम्परेचर चेंज होता है तो हमने पढ़ा था किसमें, कैलोरीमेट्री में और थर्मोमेट्री में. हमने पढ़ा था कैलोरीमेट्री में कि वहां पर चेंज इन टेम्परेचर होता है, उसे हम निकालते हैं, दैट Q दैट इज हीट इज इक्वल टू ms इंटू डेल्टा T. ठीक है, वहां पर ये m क्या होता है, मास, s क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, एंड Q क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन. सो हियर दिस डेल्टा एनर्जी E is nothing but our amount, that is Q. So we can equate the equation, that is 4 pi into capital R square into T into n to the power 1 by 3 minus 1 is equal to how much, is equal to ms into delta T. Therefore delta T, that is change in temperature, will be equal to 4 pi into R square into T into n to the power 1 by 3 minus 1, and this is divided by m into s. Okay, so this is going to be the final expression for change in temperature. So this is very important concept. Okay, so directly question will be asked from this topic, so please try to remember it. Okay, or you can do just one thing, just try to keep it in mind that how we have reached on this conclusion, how we have derived this formula. Okay, so this is our final expression. So here now the next thing or the next topic comes here is, the last topic comes here is, that is Coalesce. Okay, that means smaller drops forming big drop. So it is exactly opposite. Okay, it is exactly opposite. Okay, so here again the similar way we will utilize the similar way. Okay, so initial area will be how much, n times of 4 pi small r square. Final area will be how much, final area will be 4 pi capital R square. Similarly we can find the relation between small r and capital R, that is equal to n to the power 1 by 3 by equating volume. Okay, so it is none other than the same thing what we have done earlier. So in that case also what will happen, the change in surface energy or the work done will come out to be how much, 4 pi R square T into n to the power 1 by 3 minus 1. But this time, earlier that was the heat absorbed, but this time this will be the heat released. Okay, this will be the heat released. Okay, because the smaller drops were having, these smaller drops were having higher energy. Okay, and the big drop is having lower energy. Okay, therefore some energy has to be come out of the system, or some energy has to be released. And if energy is released in the environment, so what it will do, it will increase the temperature. Okay, so same way again we can apply the delta T, then that is change in temperature. So change in temperature will be, delta T will be equal to 4 pi into R square into T into n to the power 1 by 3 minus 1 divided by ms. So earlier in the previous that is when the bigger drop were forming the smaller drop, जब बड़ी ड्रॉप से टूट के छोटी ड्रॉप्स बन रहे थे तो उस वक्त क्या था, ये जो डेल्टा टी था ये हमारा ड्रॉप इन टेम्परेचर था, यानी कि टेम्परेचर में कमी आ रही थी. ठीक है, वहां पे टेम्परेचर कम हो रहा था, बट इस बार ये डेल्टा टी जो है दिस इज इंक्रीमेंट, यानी कि इस बार क्या होगा, ये टेम्परेचर जो है इंक्रीज टेम्परेचर. ओके, दिस इज इंक्रीज. ओके,
So like this, we solved all these things related to the surface energy, and we discussed all the concept based on surface energy. I hope you like the video. Okay. So मिलते हैं आपको आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द कंसेप्ट्स ऑफ एक्सेस प्रेशर. ओके. सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.